So first question of your GK quiz is what is the rarest blood type? ठीक है, और इसका सही आंसर है आपका AB negative. ठीक है, that's the rarest blood type out of the given options. So moving for the next question. What part of the plant conducts photosynthesis? देखो आने को इतना easy भी आ सकता है, आने को कुछ भी आ सकता है. So you have to prepare your 9th and 10th class की science. Best होता है कि 9th और 10th science की NCERT पढ़ लो आप. What part of the plant conducts photosynthesis? Options are root, stem, or leaf. सही आंसर है लीफ, है ना? क्या बात है, सबने सही आंसर दिया. चलो गुड. फोटोसिंथेसिस बोलो हम बचपन से कर रहे होते हैं ना. Animals that eat both plants and meat are called what? Omnivorous, carnivorous, insectivorous या herbivorous? So don't take this thing कि बहुत easy question आते हैं साइंस के. ऐसा नहीं होता, मिक्सचर होता है. तो हम इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. Very good. So omnivorous is the answer for this question. Where can you find the smallest bone in the human body? Pinky finger, arm, spine और ear. सबसे स्मॉलेस्ट बोन आपकी ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे होती है? पिंकी फिंगर, आर्म, स्पाइन या फिर ईयर? इट्स ईयर. ठीक है. Entomology is the science that studies dash. Option 1, behavior of human beings. Number 2, insects. 3, the origin and history of technical and scientific. Can't read it here. And the fourth option is the formation of rocks. Scientific terms. अच्छा, ठीक है. सो करेक्ट आंसर है आपका इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं. An air conditioner can be turned on and off remotely with the help of internet is an example of. So GK related to IT and science है ना, तो ये IT का GK हो गया. So it can be asked there. Options है augmented reality, automation या फिर internet of things. So it is Internet of Things. जो स्मार्ट टीवी, स्मार्ट डिवाइसेस हम यूज करते हैं उसे हम Internet of Things कहते हैं, IoT. The AI domain which can be used to predict air quality index is NLP, Natural Language Processing, CV या फिर Data Science. The AI domain which can be used to predict air quality index. You're doing predictions. So predictions जब हम करते हैं तो कौन सा AI domain उसमें use होता है? Which AI domain is used in that? Answer is data science. ठीक है? So data science is used in that. जो Google Maps है उसमें जो आवाज आती है या जब हम बोलते हैं तो वो natural language processing हो जाती है. What is the benefit of artificial intelligence? Option 1 is it reduces the probability of errors and all.
then decreases the work efficiency, increases the cost of persons and training. So the answer here is your option number A. It reduces the probability of errors. ठीक है? Which one of these is not an area of AI? Computer vision or image recognition. Second, voice recognition. थर्ड, वेब डिजाइनिंग. ऑप्शन डी है रोबोटिक्स. इसमें से कौन सा एआई का एरिया नहीं है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो वेबसाइट बनाना एआई का पार्ट नहीं है, ठीक है? सो वेब डिजाइनिंग इज नॉट पार्ट ऑफ एआई. आजकल तो खैर सब कुछ हो सकता है, बट दैट्स नॉट अ स्ट्रीम इन एआई. What two numbers are used in binary? 1 and 100, 0 and 1, 1 and 10, 1 and 2. Easiest question which could be asked about computers, है ना? मतलब जिसने बिल्कुल ही ना पढ़ा हो, कभी कुछ ना पढ़ा हो, वो इसका आंसर गलत करेगा. अदरवाइज इसका आंसर गलत हो ही नहीं सकता. सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0 and 1. Very good. All correct answer. Okay. Next is, what is a virus? A thing that infects your computer and makes it not work properly. B, a file that moves along the wires. C, a code. D, nothing. So virus is option number A. That is a thing that infects your computer and makes it not work properly. All correct answer. Very good. Coding can be used to option A, program robots. Option 2, create websites, games, and apps. Option 3, tell computers what to do. And fourth is all of the above. इसमें तो वैसे इतने 30 सेकंड की जरूरत भी नहीं है ना, फटाफट से आंसर हो सकता है. So it should be all of the above. Coding सब कामों के लिए यूज हो सकती है जितने भी लिस्टेड थे. Who is known as father of computers? Bill Gates, Microsoft, Charles Babbage या फिर none of these? Who is known as the father of computers? So the correct answer is Charles Babbage. ठीक है. Alan Turing is known as father of modern computers और normally father of computers जो है वो Charles Babbage है. OMR stands for optical mean record, optical mark recognition, both A and B या फिर none of the above. What does OMR stand for? Yes, hurry up. I think everybody has answered. So it is OMR, optical mark reader. IT stands for infrastructure technology, stands for innovation over time, the history of technology, stands for information technology, the management and processing of information using computers, stands for international trading of technology. तो IT की फुल फॉर्म क्या होती है? What does your IT stand for? So it is the third one. ठीक है, information technology.
पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, याद करो कहां सुना है आपने? नॉर्मली आप इसको सुनते हो प्रिंट करते टाइम पे। So, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ये क्या होता है? इज इट द पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट, या फिर ऑल ऑफ दीज? सो इट इज पेज ओरिएंटेशन। सो इसका सही आंसर है पेज, अच्छा इसमें गलत सिलेक्ट हुआ है, इट्स एक्चुअली पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपको ऐसे विड्थ वाइज प्रिंट करना है या ऐसे हाइट वाइज प्रिंट करना है। सो पेज ओरिएंटेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। व्हाट इज द कमांड फॉर कॉपी? कंट्रोल वी, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, या कंट्रोल एक्स? वेरी गुड। सो इट्स कंट्रोल सी। किसी एक ने गलत किया। पता है माय सन इज 6 years old और मैंने उसको भी सारी शॉर्टकट कीज याद करा दी। ही ऑल्सो नोज कि अंडू करना है तो कंट्रोल जेड प्रेस करो। तो ये तो हर किसी को याद होनी चाहिए, चाहे पेपर में आए चाहे ना आए। विंडोज 10 is an example of what? हार्डवेयर डिवाइस, जनरल सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? So it is operating system software. Very good. What does the internet prefix www stands for? Western Washington World, World Wide Weather, Wide Width Wickets, या फिर World Wide Web? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। और अगर W3C पूछ लिया जाता है तो इट्स वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। Complex scientific research is usually done by mainframe computer, mini computer, supercomputer, या फिर micro computer? Scientific research करनी है, complex scientific research. Which type of computer is used in that? It is supercomputer. What does LAN stand for? Land area network, local area network, low area network, या फिर LAC area network? So it is local area network. Very good. Who is known for developing the concept of World Wide Web Consortium? Option A है Tim Berners-Lee, B है Larry Page, C है Sergey Brin, and D है Vint Cerf. So who is known for developing the concept of the World Wide Web Consortium? किसने इस टर्म को बनाया था? सो सही आंसर है आपका टिम बर्नर-ली, जिसने HTML और www बनाया था। Dash refer to physical parts of a computer. Code, hardware, information security, या सॉफ्टवेयर? बहुत टाइम लगा रहे हो भाई इसको आंसर करने के लिए, ये तो ऐसे फटाक से देखते ही आंसर हो जाना चाहिए था। इट इज हार्डवेयर। ठीक है, तो इसका आंसर है हार्डवेयर।
Which button enlarges a window to the full size of the screen? Minimize button, maximize button, locate button या फिर close button? किससे आपकी जो स्क्रीन है वो enlarge हो जाती है to fit the window size? Everybody has answered, so it is maximize button. Very good. Who developed the first commercially successful microprocessor? Option A है Intel, B है AMD, C है IBM, D है Apple. So this is your 25th question. और इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, which was IBM. So this was the set of 25 questions जिसमें जीके थी IT एंड साइंस से रिलेटेड. ठीक है.